thank you so much. Thank you. But first things first, I'm sure मीडिया के हमारे सारे जो दोस्त यहाँ पे जुड़े हैं उनके जहन में काफी सवाल होंगे. I see Samina looking right into my eyes and saying कि अच्छा मुझे सवाल पूछना है. सब मौका सभी को मिलेगा. But उससे पहले मेरे जहन में काफी सवाल है मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा. And शिवाना जी सबसे पहले आपसे सवाल और उससे पहले आपने जो एक्सेंट पे जो पकड़ बनाई रखी है ना वो इतनी फैंटास्टिक है, हमको बहुत पसंद आई. बट इफ आई गुस्ताखी माफ, बट इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू से दैट डायलॉग बिफोर आई आस्क यू द क्वेश्चन दैट यू सेड इन द ट्रेलर, कैन यू रिपीट इट लाइव फॉर अस वंस हियर? कौन से? मैंने बहुत डायलॉग बोले. ये जो हमने ट्रेलर में देखा है कि माल तुम्हारा है पर लेकिन मार्केट तुम मेरा, एक आपके अंदाज में when we are शबाना जी are live, you know, come on, उतना तो मौका बनता है. अब आप बोलना बंद करें तो मैं प्रिपेयर कर बोलने के लिए. माल तुम्हारा होगा लेकिन मार्केट मेरा. Thank you so much. Wow. Seeing some, you know, Shabana ma'am performing live right here, it is indeed a treat. So thank you ma'am. Shabana ji, my questions to you. आपने अपनी करियर में इतने पावरफुल और लेयर्ड कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. डब्बा काटल में जो आपका कैरेक्टर है, ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया कि आई वांट टू डू दिस? देखिए भाई, घर का मामला है. बहू ने हुक्म दिया, बेटा प्रोड्यूस कर रहा है, मेरी औकात थी मैं ना बोलूं. घर का मामला था. But we want to know what any character No, wise. the character is fascinating. It's very fascinating because you have no idea where she's going, what she's going to be doing, and at this point, it was just something that came my way, and I got very excited, and I look forward to it. We are also looking forward to it. So thank you. Thank you. गजराज सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपके कैरेक्टर में कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट या सरप्राइज है जो आपके लिए नया था, कोई मोमेंट जो यू नो स्क्रिप्ट पढ़ते ही जिसने आपको एक्साइट किया कि हाँ आई लाइक दैट? मतलब आमतौर पे तो मैं डायलॉग्स याद करता हूँ, इसमें दवाइयों के नाम याद करने तो मुझे लगा कि इतने सारी दवाइयों के नाम याद हो गए हैं तो फार्मास्यूटिकल में कुछ एंट्री ले सकता हूँ मैं. फार्मेसी तो खोली सकता हूँ. थँक्यू सर. सई कशी आहेस? मला शोधायला लागतं, मला एवढी लोक आहेत इकडे. कशी आहेस? झकास. मस्त. Looking forward to your character right here, Dabba Cartel. Now, playing a police officer comes with its own set of challenges. How did you prepare for the role? We'd like to know. And also, was there a particular scene in the series that really tested you? रोज सुबह उठ के पुलिस स्टेशन जाकर बैठती थी मैं. जोक्स अपार्ट, पर एवरी सीन वाज टेस्टिंग बिकॉज आवर कैप्टन इज वेरी हार्ड टू प्लीज. तो हमें बहुत मेरे दिल से बट मज़ा आया. आई थिंक it's a pleasure, privilege to be working with such amazing people, and I'm just very happy to be here. Wishing you the best for this one. Thank you. Hitesh, my next question, the boss. Now, what was it like directing this powerhouse ensemble and bringing together such iconic performers in a world of crime and suspense? Poor thing. He'll actually have to answer this while we are sitting. Poor thing. I think in the beginning when this entire thing started, I was honestly a bit nervous. But when they all came along, I think the nervousness soon changed into a lot of excitement because all of them were such fabulous performers. So in a way, my job was much easier. You know, all of them are such accomplished actors. So I think it was a fabulous experience and almost like, I don't know, a learning curve also for me. Then why did you give us such a hard time? झूठ It है was so easy. झूठ है ये, मेरे को बोला. और बैकस्टेज ये तो कुछ और ही बोल रहा था. झूठ है, इनकी बातें मत सुनो. पर हमने जो ट्रेलर में देखा है डेफिनेटली ईज दिख रहा है सबके कैरेक्टर्स में. सो बस मेरा ही ईज नहीं दिख रहा है यहाँ. इसके अलावा मैं हर जगह ईज पे ही रहता हूँ. Thank you, Hitesh. Well, Jyotika ma'am, my question is for you. This is your first collaboration with Netflix, and the response to your presence in Dabba Cartel has been fantastic. What is it that drew you to this particular story? I'd say what is there not to draw me to the story?
Firstly, Shabana Azmi Akhtar ma'am, I think she was a powerhouse name to just be attached to, and then of course Excel and the team, and we know, and I'm very I don't know, I'm very attached to this because I feel there's a lot of women heading the show, from Monica Netflix to Shabani and all of us. There was a huge women's team that worked on Dabba Katla, and I personally felt even our crew had 70 to 80% women working in the crew. So I think just for the fact that this is absolute women power, there's no reason not to be on it. Let's give it up for all the women in the house. Come on. Jishu sir, my question's for you. If you had to describe your character in 3 words, what would it be? Well, case अभी subject है, so I can't say. I have to ask you. So, I loved. चार हो जाएगा. I loved my character. I can't say much about it. So, but as she said, the cast, the story, the producers,